ধন্যবাদ আৰম্ভ কৰিছো আফটাৰনুন আপডেট ষ্টুডিঅত মই এঞ্জেলা চাংমাই বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2026-27 বৰ্ষৰ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে ইতিমধ্যে 7 লাখ কোটি টকাৰ বাজেট এই বৰ্ষৰ বাজেটত পৰিবহণ বিভাগক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পৰিবহণ বিভাগত 5,98,520 কোটি টকা ধাৰ্য দ্বিতীয় স্থানত আছে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত ব্যয় কৰা হ'ব 5,94,585 কোটি টকা সেনাৰ আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰা হ'ব 2,01,000 কোটি টকাৰ তৃতীয় স্থানত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আছে 2,73,108 কোটি টকা ধাৰ্য চতুৰ্থ স্থানত গৃহ বিভাগত ব্যয় কৰা হ'ব 2,55,234 কোটি টকা কৃষি শিক্ষা শক্তি স্বাস্থ্য আৰু নগৰ বিকাশ লগতে আইটি খণ্ডটো গুৰুত্ব বাজেটত বাজেট সন্দৰ্ভতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াই আছে এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है हाल में जो बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है मदर ऑफ ऑल डील्स उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले इस दिशा में बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं साथियों इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है बायोफार्मा शक्ति मिशन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण क्रिटिकल मिनरल्स पर बल टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना ये फ्यूचरिस्टिक है देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है एमएसएमईज को हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा साथियों बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश भर में वाटरवेज का विस्तार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे
साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartabya Bhavan, we are inspired by 3 Kartabya. Our first Kartabya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartabya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity
making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartabya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that বাজেটত উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে বিশেষ ঘোষণা উত্তৰ পূৰ্বত অগৰগছ উৎপাদনত গুৰুত্ব মৎস্য পালনৰ বাবে 500টা জলাশয়ৰ বিকাশ সাধনতো গুৰুত্ব কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব গ্ৰামাঞ্চলত মহিলাৰ স্বনিয়োজনত গুৰুত্ব উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে 4000 ইলেক্ট্ৰনিক বাছ উত্তৰ পূৰ্বৰ মঠ মন্দিৰ সংৰক্ষণতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই বাজেটত to promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with a Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission
to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartabya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes. 2026-27 সাধাৰণ বাজেটত কেইবাটাও খণ্ডলৈ সুখবৰ হ্ৰাস পালে কেন্সাৰ মধুমেহ ঔষধৰ দাম কেন্সাৰৰ 17 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাইছে 7 বিধকৈ জটিল ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস চামৰাৰ লগতে কাপোৰৰ দামো হ্ৰাস পাইছে জোতা মাইক্ৰৱেভ অভেন লগতে বেটাৰীৰ দামো হ্ৰাস পাইছে সৌৰশক্তি উৎপাদনকাৰী সামগ্ৰীৰ দামো হ্ৰাস পাব দাম হ্ৰাস পাব বিৰি বায়োগেছ মিহলি চিএনজি চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস বৈদ্যুতিক বাহনৰো দাম কমিব এয়াৰক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীৰ দাম হ্ৰাস পাব মোবাইলৰ বিদেশ যাত্ৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাই বিদেশ টুৰ পেকেজৰ টিচিএছৰ 5% হ্ৰাস পাব আৰু ইপিনে দাম বৃদ্ধি হ'ল খুৰা লগতে খনিজ সামগ্ৰীৰ স্ক্ৰেপ সামগ্ৰীৰো দাম বাঢ়িব পাৰে To provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets
for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund. ছাত্র-ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002